लगे हुए सवेरे 9 बजे से। लाइन में तो लगना ही पड़ता है। इस लाइन में ही 1.5 घंटा लगे। हाँ जी। आप बोलो, निर्मला, उम्र 55। क्या हो गया आपको? दांतों में? आधा घंटा यहाँ लगे, 1-1.5 घंटा अंदर लगेगा। रूम नंबर 17 में आना। पूरा ही 12 बज जाएंगे। सायरा, नव्या की उम्र क्या है? क्या हो गया इसको? 27 नंबर में जाना इसको, बच्चे को लेके, ठीक है? कुसुम, अंदर में जाएंगे डॉक्टर के पास, वहाँ भी 1.5-2 घंटा लगता है। Outside Lal Bahadur Shastri Hospital in East Delhi, it's a day like any other for the people waiting in the queues and for the people manning the registration counters. Many of these people are daily wagers and have spent nearly half a day at a secondary hospital to treat a common ailment like cough, cold and fever. But there is little option for them. A majority of patients only require a consultation, but the government's primary healthcare system is dysfunctional. Private providers in the city either charge exorbitant rates or are underqualified. Overcrowding is the primary reason for the poor quality of healthcare service delivery. There is frustration over the long hours of wait at every department. बहुत भीड़ होती है। अगर अरविंद में जाओ तो एक दिन में एक ही काम करा पाते हैं। अब डॉक्टर दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर वो लिख के कुछ हम लोग को चेकअप के लिए दिया, खून टेस्ट और सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड, तो एक महीना का टाइम मिलता है। अब एक महीना का टाइम में अगर बच्चा सीरियस है तो मर जाएगा। Doctors can only give little time for each patient, including for those that are critical and require specialist care. We are at the Deen Dayal Upadhyaya Hospital. Last night, this 640-bedded hospital had more than 745 indoor patients, which means that more than 100 patients were sharing beds. The greatest rush was at the maternity, pediatric and medicine wards. This is a common problem across government hospitals in India's urban centres. To decongest the hospitals and improve efficiency, the Delhi government decided to take Mohalla clinics to the people living in underserved localities. In July last year, it launched a showpiece pilot project at Piragari at the Punjabi relief camp. Housed in a porta cabin, the Mohalla clinic was set up at a cost of 20 lakh rupees. The clinic functions from 7 a.m. to 7 p.m. and has 2 doctors on shift duty, a nurse, a pharmacist and a lab technician. रोने से क्या होता है? मत नहीं, हाथ में जोड़ो, ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो, ठीक हो जाओगी। शुगर वुगर तो नहीं रहती? नहीं जी, मैंने यहीं से करवाई थी 2-3 दफे। करा ली? ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। बीपी का नहीं पता, बीपी बढ़ता हो थोड़ा। मैं करती हूँ। The doctor is like a family physician and approaches patients with empathy. मॉर्निंग वाले जो जितनी ये काम पे लेके जाती हैं तो ये बता देती हैं भाई हमारे कल है, तो वो लोग 7:30 तक सब अपना आके इन्वेस्टिगेशन करा के चली जाती हैं यहाँ पे। और जो ANC पेशेंट्स हैं, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है, पहले ये लोग बहुत डरती थी, ये लोग क्वैक्स के पास जाती थी, तो अभी हमारा टारगेट है कि ये वहाँ ना जाएं, तो उस वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ आ रहा है हम लोगों को। There's a token vending machine to manage queues and a lab in a suitcase for basic diagnostic tests. तो यहाँ पे एक्चुअली सारे अभी जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो भी तो सारा हो रहा है यहाँ पे, जैसे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, LFT है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, HbA1c है, VDRL है, ब्लड ग्रुप है, हीमोग्लोबिन है, प्रेगनेंसी टेस्ट है। Another technological intervention is the Swasthya Slate. Relevant information can be entered by the doctor, the lab technician and the pharmacist to ensure paperless coordination. 24 घंटे तक लगातार पीना है। जो हमारी ये एक ड्रग बुक होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब कुछ है जो इस क्लिनिक में होना चाहिए, जो क्लिनिक में होना चाहिए। The patient gets free consultation, diagnostics, medicines, immunization and family planning services. This small and compact Mohalla clinic has literally brought healthcare to the doorstep of the 10,000 strong community at the Punjabi relief camp. पहले इतनी दूर जाना पड़ता था,
फिर सोचना पड़ता था कि जाए ना जाए, इसलिए अभी पास में ही है तो सारा काम छोड़ के पहले अपने दिखाने आ सकते हैं। महीने में एक बार जाती हूँ शुगर टेस्ट करने। आप खुश हैं कि हाँ जी हाँ जी घर के पास आ गया है? हाँ जी घर के पास भी आ गया, फिर इतना वो भीड़ भड़कम नहीं होता, आराम से ले लेते हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं। दूसरे अस्पताल कैसे हैं जो बड़े वहाँ अस्पताल? पे जाओ तो फिर लाइन लगाओ, फिर ढंग से बात भी नहीं करते। अगर भीड़ में खड़े हैं, अगर आगे आ जाओगे तो डांट के पड़ते हैं, कैसे आगे अंदर। कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। फायदा हो रहा है? हाँ जी, छोटे छोटे हाँ जैसे छोटे बच्चे हैं, जुकाम खांसी मिनट में जाओ दवाई ले आते हैं हम। और यहाँ पे व्यवहार ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता है? नहीं नंबर है तो जल्दी। The clinic has been able to strengthen the preventive and promotive aspects of healthcare, particularly for children. 90 to 95% लोग वहीं पर सेटिस्फाइड थे, उनको आगे भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 5 से 10% लोगों को हमें हॉस्पिटल भेजने की जरूरत पड़ी या रेफ़र करने की जरूरत पड़ी है, एंड दे आर मोर सेटिस्फाइड देयर। हमने तो नहीं सोचा था, उस ट्रायल के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि जो डॉक्टर वहाँ पर हैं उन लोगों की कितनी रेस्पेक्ट है वहाँ पर उस एरिया के लिए। और वो डॉक्टर मुझसे मिलने आई एक दिन कि सर कुछ काम है, तो मैंने सोचा कि डिस्पेंसरी में कोई दिक्कत होगी, मोहल्ला क्लिनिक में कुछ कमियाँ होंगी। शी वॉज टॉकिंग अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स कि कुछ लोग रात को शाम के टाइम वहाँ पे शराब पीते हैं या वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अब ये देखिए इंटरेक्शन किस लेवल तक का जा रहा है। But there are cases like Sapna's that cause worry. She chose to have a baby delivered by a local midwife rather than go to a government hospital. She had been referred to the hospital by the doctor at the Mohalla clinic. But Sapna says she was unhappy with the rude behavior of doctors there. सरकारी में सही तरह केयर नहीं करते ये। एक तो इंसान बुरी तरह अपनी हालत पे नहीं होता और ये बहुत बेइज्जती करते हैं अस्पताल वाले। Clearly, the performance of every link in the chain is important. By the year end, the Delhi government plans to set up 1,000 Mohalla clinics, each catering to a population of 10,000 in the city. But since setting up of porta cabins will take till December, 100 clinics will be set up in rented rooms within a month. We decided to set up a smaller pilot of the methods as to how we will replenish the pharmacy or how we will monitor the work output of the doctors. In next 6 months, we would have figured out a lot about what kind of problems to face when you are running these many retail OPDs. Monitoring, management and mentoring or even supervision becomes that much more complicated. We are proposing to use IT for that. The software and the tab is being finalized. So the patients are going to be identified on basis of a unique identifier, say the Aadhaar number or telephone number or election card or something. The model will be tweaked slightly. The lab in a suitcase and the Swasthya slate will be discontinued for cheaper, better and more comprehensive alternatives. Clinics would run for only one shift as there is a shortage of doctors. The Pidagari clinic has staff on deputation from the National Health Mission who are on contract and are paid less than Delhi government employees. There is some dissatisfaction. For the new Mohalla clinics to succeed, it would be vital for the Delhi government to ensure that all doctors show a similar commitment. The existing 260 dispensaries under the Delhi government have failed to be responsive to patients. The reasons are a lack of accountability, absenteeism by doctors and unavailability of medicines. After the break, from the first tier to the second tier of the new healthcare system, 22 polyclinics open in the capital.